qualifier without any worry, and that's why this match is going to be very, very interesting in the morning itself. Good morning, everyone, and on behalf of organizers and myself, Satish Salyan, Mr. Gopi, would like to invite each and everyone for the final day of this cricket tournament. Good morning, those who are watching live telecast of this cricket tournament through M9 Sports YouTube channel. And so far in 3 days of cricket tournament, did a great job getting some very good quality coverage of this KPL season 8. And yes, everything is ready for everything is ready here for the match number 1 of the day number final 4th day of this cricket tournament. And umpires are walking, already they made their way to the pitch, to umpire Sriraj as well as umpire Harish Padil, two very recognized umpires in the South Kent district. Harish Padil, of course, has got a 28 to 29 years of experience in under-arm and over-arm cricket. Such a busy umpire we can see here in South Kent district because of his dedication and determination toward the work of umpiring. And Sriraj is also did a fabulous job in the field of umpiring in last 8 to 10 years, and he's been becoming now one of the very good outstanding umpires here in the South Kent district. Along with these two umpires in our commentary box, very popular and man who got a lot of respect to the work of umpiring, umpire Roland Pinto will be the third umpire here in our commentary box. And yes, myself, Satish Salyan in English, Mr. Gopi will going to entertain you in Hindi, and Star Nawaz will going to join in our commentary box in the last and final day of this cricket tournament. Satya Sarup, as always, did a great job as a scorer in the commentary box, the man behind the screen. A very, very difficult job as far as official part of cricket is concerned. Need to be a lot of concentration, and he did a fabulous job for the success of 3 days of cricket tournament. And in the scoreboard we have yes, Dhanraj did a great job in the scoreboard, and thank you very much each and everyone. And M9 Sports and always the technicians and cameramans under the great leadership of Saujan, everyone did a great job for the success of this cricket tournament. And now Zubair will go to start the proceedings after winning the toss. KKR elected to field first, and Prajwal will go into face a first delivery of Zubair. Beautifully bowled. As always, Zubair's first delivery is always a difficult one. And I saw him picking up a wicket in the first delivery. He's got a habit of picking up wickets, so that batsmen need to be very careful when you are facing the delivery of Zubair. Zubair in this particular tournament, he got outstanding tournament in the form of bowling is concerned. Always leading from the front in the bowling department, and second time in this over bowling away from us. Right arm over the wicket. This time drives that one powerfully back to Shakir in the non-strikers. And Shakir, of course, that ball is hitting his stomach, powerfully driven, and a little time to react. He cannot avoid the stroke from Prajwal, who's just a little bit shuffled across the line of delivery. And maybe Shakir is asking Prajwal to do that, so because if you let the wickets focused on to the bowlers, then it's going to be the bowler like Zubair has got ability of bringing the ball into the stumps. Oh, what a delivery. Absolutely perfect on this. Chance of run out in the... Oh, my goodness. Rajesh might be thinking about... Definitely it's going to be a close one. And definitely it's going to be an end of Shakir's innings if it is a direct hit. And very close to the leg stump of Shakir, that ball of Zubair. And Prajwal is the one who's got a very good tournament from his bat. Facing again... that is a really a good cricket there from Prajwal. He is quite watchable in this cricket tournament. I am watching him. He is quite a different attitude is implemented. That's really good to see. He's not really like that throwing his bat for each and every ball. But you know exactly that ball which is used for this cricket tournament is not like that. You can hit the ball out of the park. But the singles is also very important.
Again, Shakir not quite able to get that one into mid wicket. Of course, he wanted to play that one between mid on and mid wicket, but again, that ball is which has got an inside edge of the bat, and there is no chance at all for any run. 3 on the board without any loss of any wicket in the over number first is in progress. Zubair again. Single-handed sweep shot, one of his favourite, down to square leg region. And with the single scope, moves on to 4. Tidy over, very tidy over there from Zubair. As like he did in the last 3-4 matches for his team. Again, Zubair got a very good start. The wicketless, but very economical. It's 4 on the board without loss of any wicket. Bright and sunny morning, but quite a different condition I want to say compared to last 2 days. 2 days there is a windy morning, and today we are not finding that much of wind in the ground. You can see that very constant. The wind is very constant, and slight bit of different condition out here today in day number 4, the final day of this cricket tournament, Kudla Premier League season 8. But it's a very blue sky. The birds are flying high. And making this cricket tournament is again most excitement and more beautiful. And the UCG cricket ground, everyone knows this is the one ground where you can find a lot of cricketing action, especially underarm cricket. The performing here in the UCG cricket ground is going to be each and every players taking that one very seriously, because always it's going to be a pleasure for each and every players to come and perform. It's Shakir shuffled across the line of the delivery, going for the mighty drive. Not quite, just a good throw coming from the fielder, but not good enough to stop Shakir to score a couple of runs. Again, this time a mistimed cricketing stroke there from Shakir, but probably he will be happy to get that couple of runs from his bat. 6 on the board without loss of any wicket here in over number first is in progress. Sustan. So far for KKR in this particular tournament, Sustan did a great job, and as an opening bowler, because power play over always going to be a key for the success for the fielding team. Again, Shakir wanted to go to get that one into extra cover. He's not happy with himself. He knows that there is no cover point. There is no extra cover. Once he get past that fielder, he will go into opportunity for him to get the boundary there. But he mistimed that one. One more single has been added to total. 7 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. Short third man, short cover point, short extra cover, deep long off. Now one fielder looks like from mid wicket is just coming across, maybe in a straighter version towards wideish long on, between mid wicket and long on. That is a cow corner, and outside the line of off stump. Again, Rajesh fails to collect the ball. Frustration for the bowler. By call by umpire. One more addition to total, and scoreboard numbers on to 8 on the board. Both the batters are dealing with a single so far in this second over of the second over and last over of the power play is in progress. Sustan back to his bowling mark from the Vision India end. Oh my goodness, looks like again Shakir not quite able to get that one from the middle of the bat. Luckily there is even that ball looks like he will going to drag the ball into the stump. He's so lucky, ball just misses the stump. No damage done. 8 on the board in the over number second is in progress. This time Shakir drives that one. So looks like it's not that much of comfortable in the middle, Shakir, but he's a kind of batter who can be the very handy, and it takes a little bit time to settle down. The morning, it's not so easy for any batter. Ball which is not coming to the bat, need to wait for the ball to coming to the bat. Slowness of the pitch, watering, we can see that wetness in the pitch. And here is again Sustan. The one drives that one, nice looking drive there from Parjwal. He is looking so good in this tournament. Retain the strike for the next over. After completion of over number 2, team Redwings Rangers are 10 for the loss without loss of any wicket. They're going exactly
5 runs per hour. And straight away, Shakir is not happy with this bat. I think maybe he using that bat a little bit weight. When you have using a weight bat, and sometimes it's very difficult to you to get the timing right because of the weight of the bat. Maybe Shakir is thinking about I want to use a light bat, and different batters are having their different tactics as far as using the bat is concerned. Some players using a lightweight bat so that they can have a very quick reaction to the ball. And if we're coming to the international cricket, Sachin Tendulkar is the one who used heaviest bat. And heaviest bat in the sense, of course, he in the middle of the career is suffered from tennis elbow. That's only because of his bat, used that heavy bat. But still, after getting treatment, but he is not given that bat. Still, he using that bat only because it's all something that the batsman loves to use, the heavy bat. And here also in under-arm cricket, the few field players loves to play heavy bat so that you can get some big shots. The heavy bat, because the tennis ball, everybody knows, not a heavy. It's a very lightweight tennis ball. So that's maybe the reason that some batters wanted to use the heavy bat. Driven that one towards the mid-wicket revision. Misfield by the fielder, but he can stop that one. Yes, he succeeded, but here is the batters completed 3 valuable runs. He can't do that mistake. KKR, the mid-wicket fielder, what could be a certain single. The fielder in the mid-wicket, slight a bit of urgency shown, so that 3 valuable runs which is scored. Sustan, the fielder in the mid-wicket. Rizwan, bowling away from us. Oh my goodness, he wanted to play the sweep shot. I don't know for why he's left the ball. This is really very funny, isn't it? Looks like he was going to sweep the ball. Maybe a misjudgment. He thought it might be, why not? I will going to get one extra delivery, an extra run. I want to left the ball, but ball just passing around his legs. And score 13 on the board. Again, lovely delivery. Extra bounce in that occasion there for Rizwan. Shakir, one who got a lot of runs in his career by playing such kind of cricketing stroke, but which is not really working out here. And again, Rizwan bowling away from us. Right arm over the wicket, away from us. This time definitely going to be punishable, not from the batter but from the umpire. Arish Padil getting a morning exercise here. And scoreboard now moves on to 14 on the board without loss of any wicket. Kishore just coming from the cover point region, got some word with Rizwan to not to ball the wide. Swept that one very nicely down to square leg region. And with that single scoreboard moves on to 15 on the board. 15 without loss of any wicket. KKR, under the leadership of ownership of Tilak Guru and Naushir, did a greatest job so far. Even Redwings Rangers also got a fantastic tournament. This time going for the mighty drive, but not quite able to get that one from the middle of the bat. Prajwal picked up a single. Prajwal played one of our quality innings in the first match. I'm seeing him playing such a long innings. And he quickly realizing the condition of this cricket tournament, condition of this pitch, and you know exactly, it's not like that you need to get a big shot straight away. Need to settle down, need to spend a little bit time, and then only you can get some good scores. So both the batters are playing a very defensive role, and morning Shaitan 3 overs which is completed, 17 on the board, just under 6 runs per hour, run rate progressing, 17 on the board. Coming back to Shakir, he's not really going in his best of his business in this particular season, and he struggled to get runs on the board. But I'm sure that he is the kind of batter he will not going to take many times to get his natural form back.
It's all happening for each and every cricketer. It's not like that. If you see some legend players even in the international cricket, everyone faces that problem that out of form is a part of cricket. And it is all about the mindset of the batter. Is always is very key for the success. It's not like that your technique is wrong because you are the one got a lot of runs in the same technique, but sometimes it's all happening because the mindset. Once you are out of form, something is going in your mind. That's why it's very important that whenever you're going entering into the ground, you need to see that which innings I played very good. That innings you need to memorize, not that innings which is you failed. Because if you see that, if you're remembering the 2-3 innings which you have failed, your level of confidence will coming down. If you remember the one of the best innings you have played, that will grow your level of confidence. That's what each and every player have to remember when you are running out of going out of your best of form. If you want to regain the form, you need to regain that memories which you played very good innings in your career. 17 on the board without loss of any wicket. Ajit is introduced. This time, chip that one, and Shakir again fails to do that. So, half-hearted chip is not like that. He played that one powerfully and with a full mindset. This is all happening, what I am talking about. But Shakir again spent the time a little bit, and of course adapted to the condition of the pitch and the match. But unfortunately, is not really seeing the fielder where he is situated. There is a fielder at extra cover, and Shakir tried to go over the top, but not quite able to get the distance right. There is the extra cover fielder waiting for that catch, and Shakir back into pavilion. 17 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. One more batter just came into middle who really surprised everyone. Please don't forget this name, who is responsible for the success of Redwings Rangers is none other than Shravan. What innings they played a previous match, the league stage matches. One man army, and absolutely one of the best innings I want to say in this KPL played by Shravan. Under pressure he performed, and again he need to perform now. And 17 for the loss of 1 wicket. Ajit got a breakthrough in the first ball. Second time is over. Appeal for leg before wicket. Umpire says it's not from the leg, but it's from the bat, so that no question of leg before wicket. Sri Raj, the umpire, being the cricketer, former cricketer of Gore Young Boys. It is good to see that some former cricketers are coming to the umpiring job. Always helps them because experience always key for the success. They got a lot of experience in underarm cricket and make it so easy for them in umpiring field under guidance of Roland Pinto. They got South Canara Umpiring Association. 18 on the board for the loss of 1 wicket. Welcome to Star Nawaz for the final day of this cricket tournament. This time, chip that one. Will it go into your magazine? Yes, it does. What a magnificent struck. This is an unbelievable struck that from Prajwal. You cannot believe your eyes because getting a 6 in underarm cricket in the cow point region is always going to be a big ask. This kind of cricketing stroke will only the players who are loves to play. Those who are equally they're playing overarm cricket. That kind of cricketing stroke we can see witnessed here from the bat of Prajwal. Unbelievable ball just sailing into the ground. Sailing into the road out of the ground for a massive 6. So nicely plays it down to Cow Point region. They coming back for the check, and Karthik, the fieldsman, slight a bit of slowness to go back to Cow Point region. Couple of runs has been taken. Now I think after that 6, maybe Shakir is thinking about there in the pavilion. Why I'm checked that stroke? If I played that one right from the middle up with the power, I also get some distance for that cricketing stroke. 26 for the loss of 1 wicket. Again, nicely bowled there by Ajit, not quite giving any room for Prajwal to play that another extra cover drive. Productive over, even that was
successful over, one wicket in that over of Ajit, the wicket of Shakir, but they still KKR, Redwings Rangers, they got runs what they really wanted in this over. The runs what which is matters in this over, and Redwings they got what really wanted in that over. So 4 gone after completion of over number 4. It's 27 for the loss of 1 wicket. 4 overs remaining, and in the similar run rate, its projected score will be 54-55. And Gopi, welcome and good morning to you, and welcome for the final day, the decider day of this Kudla Premier League season 8 2023. And first match itself, it's been very interesting because KKR and Redwings Rangers, the two teams which is has got a very good tournament and league stage matches. But a win here for Redwings Rangers takes them into tops in the points table. Even KKR win here they makes a little bit easy for them to qualify for the playoff round. Altogether, Gopi, it's going to be a very interesting match in the morning. बिल्कुल सतीश, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, इस वक्त रेडविंग्स अगर जीतता है तो पॉइंट्स टेबल में टॉपर हो जाएगा। और जहाँ तक केकेआर का सवाल है, अगर केकेआर विजय दर्ज करता है तो उनके भी प्लेऑफ पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी उज्जवल हो जाएगी। तो पहली गेंद को इस वक्त ढकेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। जुबैर इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाते हुए फील्डर वहां पर मौजूद और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और जुबैर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए श्रवण, जो कि इस श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दे चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जुबैर ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद इस वक्त पहुंचे सिली मिड ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके और गेंद जब तक स्क्वायर लेग पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। बाई के रूप में सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ फिर से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए रेडविंग्स के लिए और इस बीच हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, जस्ट पुशिंग द बॉल इनटू द हैंड्स ऑफ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सिली मिड ऑन फील्डर एंड गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुके हैं। 5 overs completed, 34 runs on the board, 1 wickets lost and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings. Just talking about the next match, Trescon Vikings will take over Team Roof Tech in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, कुडला प्रीमियर लीग 2023 सीजन 8 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू और यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड ने। और निस्संदेह ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई आज इस श्रृंखला का दिन नंबर 4 का पहला मैच इस वक्त प्रगति पर है और इस वक्त मुकाबला जारी है केकेआर मैंगलोर और रेडविंग्स रेंजर्स के बीच। और विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अजित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन भी इस वक्त मौजूद है। और इस बीच पहली गेंद लेकर इस वक्त अजित तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त प्रज्वल के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और इसी के साथ प्रज्वल का विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा था लेकिन बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे गेंद धीमी गति से आती हुई और पेस का चतुर परिवर्तन किया इस वक्त गेंदबाज ने और इस धीमेपन को समझ नहीं पाई इस वक्त प्रज्वल और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंची, इस वक्त सीधे टकराई स्टंप्स पर, ऑफ स्टंप पर गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो
प्रज्वल की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 20 रन प्रज्वल ने बनाए। ही स्कोर्ड 20 runs into his credit, including one massive six, and after being playing a fine knock for their side of 20 runs, Prajwal is backing to pavilion, and a second wicket lost for Redwings Rangers. तो इस वक्त प्रज्वल का विकेट पतन होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अल्ताफ, एक और प्रमुख बल्लेबाज, इस वक्त स्ट्राइक रेट की ओर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज अजित की ओवर की अगली गेंद का। तो पहली गेंद पर अजित इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और अब अल्ताफ नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई, फील्डर एक बार फिर से मैदान पर छाते हुए, और इस बीच अजित नए बल्लेबाज अल्ताफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन जस्ट ओवर द गली फील्डर हेड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। रिवर्स शॉट खेला था इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद गली फील्डर के सिर के ऊपर से निकली, और जब तक गेंद को बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, उसी फील्डर द्वारा अपने पीछे की ओर दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ इस वक्त अल्ताफ अपना खाता खोल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज, ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला मिड विकेट पर। इस बीच थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद कुछ वहां पर पत्थर से टकराने के बाद कुछ हद तक अपनी दिशा को बदली, और यहाँ पर गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और दोबारा जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाज, ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली, एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोर रुक चुका है 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अजित तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच अजित, ये गेंद इस बार उछाला, बेहतर स्ट्रोक, फील्डर सीधे तैनात, और कोई मौका नहीं उन्हें गेंद को रोकने का, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर लगोन पर तैनात थे, बिल्कुल सीधे स्ट्राइटर, गेंद को उछाला तो थोड़ा सा स्क्वायर, लेकिन गेंद इतनी तेजी के साथ निकली कि फील्डर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला वहां पर। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ यहां पर अल्ताफ के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। लगभग गोली की रफ्तार में गेंद को इस वक्त खेला था इस वक्त जमीन के सहारे, और गेंद सीधे डीप वाइड स्लॉन्ग और सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक अल्ताफ द्वारा। अगली गेंद लेकर अजित इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को उछालना चाहे एक बार फिर से, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद, उछाल नहीं पाए, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ रेडविंग्स रेंजर्स 42 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। तो सुबह का वक्त, और अगर वक्त के बारे में कहा जाए तो 10:02 यहां पर बच चुके हैं। बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, बादलों का नामो निशान नहीं, प्रखर धूप इस वक्त मैदान पर छा चुकी है, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 के नाम पर। और आज इस श्रृंखला का अंतिम दिन, और अंतिम दिन का पहला मैच इस वक्त जारी है केकेआर मैंगलोर और रेडविंग्स रेंजर्स के बीच। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए कार्तिक का बाएं हाथ के गेंदबाज, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रवण। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए रेडविंग्स रेंजर्स के लिए, और एक बेहतर स्कोर की ओर वो इस वक्त बढ़ता हुआ। और इस बीच अल्ताफ, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर, और गेंद को रक्षात्मक तरीके से इस वक्त ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज कार्तिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए,
ये गेंद ड्राइव किया हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर मिड ऑन पर, और जब तक इनको मिड ऑन पर रोका जाता जुबैर द्वारा 1 रन का इजाफा हो चुका है। जुबैर ने गेंद को रोका था मिड ऑन 20 गज के दायरे के अंदर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा गेंदबाज, ओह स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए बाई के रूप में। गेंद को जल्दबाजी में फील्ड करने के प्रयत्न में गेंद से अपने नजरें हटा ली और गेंद उनके हाथों को वंचित करते हुए सीधे निकल गई इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस मिसफील्ड की बदौलत 4 रन रेडविंग्स रेंजर प्राप्त करता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज कार्तिक तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 49 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज कार्तिक गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन मच स्ट्राइट लाइन। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त कार्तिक तैयार। अंतिम बार इस ओवर में बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। श्रवण के बल्ले से यह चौका लग चुका है विद ट्विस्टेड बैट। इंप्रोवाइजेशन करते हुए रिवर्स शॉट स्विच हिट के जरिए इस गेंद को खेला कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से और गेंद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के दीवार पर यहां पर टकराती हुई सीढ़ियों पर टकराती हुई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 50 रन पूर्ण हो चुके हैं रेडविंग्स रेंजर्स के। 50 कम्स अप 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 7 overs completed and now they are looking in a commanding situation. लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और देखते हैं हमसे दूर वाले छोर से यानी विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी कौन शुरू करते हैं। सुस्तान को गेंदबाजी पर बुलाया गया है अपना दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए। पहले ओवर में सुस्तान ने 5 रन प्रदान किए थे और दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अल्ताफ और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त जाते हुए और इस बीच 4 खिलाड़ी 20 गज के 5 खिलाड़ी कहना पड़ेगा 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और इस बीच एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। अब 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर सुस्तान तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछाला था जरूर लेकिन स्ट्रोक में पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका 53 रनों के ओवर पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और अल्ताफ की छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। 9 रन अल्ताफ ने बनाए और आखिरकार एक चौके की मदद से और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ करना एक और प्रमुख बल्लेबाज रेडविंग्स रेंजर्स के लिए इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। गेंद की परीक्षा यहां पर करते हुए और अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए गेंद को पकड़ कर रख करना से और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। शायद गेंद में दरार आ चुका, गेंद जो कि फूट चुकी है और यहाँ पर शायद दूसरे गेंद के लिए इस वक्त मांग की जाएगी। तो अंतिम ओवर का खेल बाकी, सिर्फ 5 गेंदें अब बाकी हैं उनकी पारी में। तो गेंद को इस वक्त बदल दिया जा रहा है और
और उस बदलती गई गेंद के साथ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज सुस्तान अपने दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार करना। नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सुस्तान की गेंदों का। और विजन इंडिया एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुस्तान। काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और ओवर की अगली गेंद लेकर सुस्तान इस वक्त तैयार था। तो बड़ा विकेट, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्विकर फ्रॉम द बॉलर। और करना ने आक्रामक प्रहार करना जरूर चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 53 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इससे एक बार फिर से सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए करना के लिए ये गेंद। इस बार करना ने गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन यहां पर नहीं बच पाए, रन के लिए दौड़ पड़े। और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद गेंदबाज ने कुछ आगे बढ़ते हुए यहां पर विकेट चटका दिए, गिल्ले बिल्स उड़ा दिए और चौथा विकेट गिर चुका है। करना आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और नए बल्लेबाज के रूप में अब क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से नए बल्लेबाज वैशाख, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है। और सामना इस वक्त करते हुए श्रवण, जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। और सुस्तान फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बड़ा विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त बेहतर गेंद थी। इस बार शॉट थर्ड मैन फीडर के हाथों में गेंद और एक रन मिलेगा बल्लेबाज को। He's got a bat on that at the last moment। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर। अब तक बेहतर ओवर साबित हो चुका है सुस्तान का। और सिर्फ एक रन पहले 4 गेंदों में सुस्तान इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। 2 विकेटें भी इस ओवर में गिर चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज सुस्तान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन ओवर द विकेट पहली बार वैशाख का इस वक्त सामना करते हुए सुस्तान की गेंदों का। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। बाई का इशारा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी थी और एक रन का इजाफा हो चुका। 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। This is the 8th and the last over in progress in the innings. The last ball of their innings is now coming up। सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए श्रवण के लिए अंतिम गेंद दाहिना हाथों पर द विकेट। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार पहुंची गेंद गेंदबाज के हाथों में शॉर्ट थर्ड मैन फीडर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं और यहाँ पर उनके पारी के निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो 56 रन यहाँ पर बनाए रेडविंग्स रेंजर्स ने। बेहतर ओवर रहा सुस्तान का, जिसमें अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन प्रदान किया और बल्ले से अगर कहा जाए तो सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किया। बेहतरीन गेंदबाजी स्लॉग ओवर्स में इस वक्त सुस्तान ने की है। तो 8 ओवर की समाप्ति 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस वक्त जोड़ चुका है रेडविंग्स रेंजर्स। लक्ष्य इस वक्त केकेआर मैंगलोर के लिए 57 रनों का और रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है 7.12.5 रन प्रति ओवर, 7.125 runs per over, 57 runs they have to score for victory in the stipulated 8 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not। उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आज पहली बार मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब स्टार नवाज सर को मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूँगा और वो आपको आंखों देखा सुनाएंगे जब यहाँ पर केकेआर मैंगलोर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी जी। केपीएल 2023 आखिरी दिन के पहली मैच, सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं इस केपीएल सीजन 8 पर। ऑफलाइन और ऑनलाइन पर भी M9 स्पोर्ट्स के जरिए जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं
उन सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं आखिरी दिन की पहली मैच के लिए। रेडविंग्स रेंजर्स और केकेआर मैंगलोर, दोनों बराबर की टीम। खिलाड़ियों की क्षमता के ऊपर अगर टीम को मापे तो निश्चित रूप से दोनों टीमों पर इक्वालिटी है, बराबर की टक्कर देने की तमाम लक्षण दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर शरीर पर है, उनकी शारीरिक भाषा पर है। लेकिन कभी कभार जब इक्वलाइजेशन आते हैं, बराबर के तोल मोल आ जाते हैं, तो ऐसे समय पर उन दोनों टीमों में से किन किन खिलाड़ियां अपनी क्षमता को द बेस्ट दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो एक दूसरे पे जब भारी पड़ते हैं तब जाकर उनमें से एक अच्छे स्थान पर निकल जाते हैं, अग्र क्रमांक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर वही एक नज़ारा भी, क्योंकि रेडविंग्स रेंजर्स इस श्रृंखला में शुरुआत जिस तरह से दिखाए हैं और टीम के मालक आइकॉन शाकिर के साथ जुड़ते हुए अपनी टीम के लिए चुने हुए एक एक खिलाड़ियों की क्वालिटी जो है निश्चित रूप से काबिल तारीफ। और दूसरी तरफ केकेआर तिलक यंग फ्रेंड सुरवा और नौशील के मालकत्व पर जिस तरह से उन्होंने जुबैर, साजिद जैसे खिलाड़ियों के साथों साथ बाकी बच्चे जितने भी खिलाड़ियों को अपने टीम पर शामिल किए हैं, टक्कर देने लायक खिलाड़ियां। तो पहली गेंद शाकिर, 57 रन के लक्ष्य, 57 इज अ टारगेट। 8 ओवर के निर्धारित मैच, और इस मैच के फलितांश दोनों टीमों पर असर पड़ाने वाले हैं। दोनों टीम ये चाहते हैं कि इस मैच के जीत के साथों साथ आगे आने वाली जो रास्ता है, आगे बढ़ने की तमाम रास्ता आसान हो जाए। अगर हारते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं यहां पर अंक पट्टी पर कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं। शाकिर तैयार, और इस बार ऑफ स्टंप के एरिया पर गेंद काफी बाहर नजर आते हुए और वाइड बॉल के इशारा अंपायर से अतिरिक्त काता पर एक सिंगल रन जुड़े। रनों की संख्या कुल मिलाकर 2 रन। शाकिर फिर एक बार तैयार, विजन एंड से अच्छी गेंद, कोई खराबी नहीं। अंडरम गेंदबाजी पर जितने आप झुकते हैं गेंदबाजी के समय पर, और जिस तरह से आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर डिपेंड होते हैं कि आपकी गेंदबाजी की क्वालिटी क्या है। इस बार भी अच्छी लाइन, लेकिन करारा जवाब, बहुत ही करारा जवाब। अजीम की बल्ले से निकल आई ये आज के, मैं कहूंगा आज सुबह के ये तूफानी छक्का है। जिस तरह से धूप के बीचों बीच एक ठंडी हवा के महसूस आप ले रहे हैं, उसी तरह शुरुआत देख लीजिए। ये अजीम विस्फोटक बल्लेबाजी की दूसरी नाम है ये अजीम। ज्यादातर मैचों में अजीम अपनी ऊंचे ऊंचे छक्कों के लिए माने जाते हैं, और आज जिस गेंद पर उन्होंने छक्का लगाए हैं, यह देखने वाली बात है। जिस तरह के लाइन और लेंथ वाले गेंद पर कोई खराबी नहीं नजर आई उस गेंद पर, लेकिन अजीम के लिए बिल्कुल कोई खतरा नहीं, वहां पर कोई सवाल नहीं थे। अपने दिलो दिमाग को बल्ले से जुड़ाकर इस तरह से छाटा लगाए कि गेंद तो निश्चित रूप से काफी ऊंचाई के साथ सीमारे का पार किए। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद को खींचना चाहते थे, लेकिन शाकिर की चातिर, शाकिर तो चातिर निकले यहां पर। अजीम दोबारा वो कोशिश करने लगे, पावर प्ले के फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन पावर प्ले के समय पर फील्डिंग की पोजीशन को आप सही मानने पर समझना होगा, वरना अंजाम इस तरह से होते हैं। भले ही रन 1-2 कम मिले आपको, लेकिन शॉट सिलेक्शन के समय पर फील्डिंग की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए फील्डिंग करना, यह चालाकीपन होना चाहिए आपके पास। आरंभिक खिलाड़ियां अगर लगभग 3 से 4 ओवर तक अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, तो रन अच्छे खासे बनने के साथों साथ आपको मिलने वाले वो जो विश्वास है, बाकी बचे ओवरों पर आप काफी आसानी के साथ रन बनाने की मौका मिल जाते हैं आपको। हर एक कमजोरी आपके सामने होते हैं, तब फील्डिंग की हो या गेंदबाजों की, जानने की मौका मिलते हैं, और उसके बाद उस पर अमल करने की तमाम रास्ताएं आपको लिए आसान बन जाएंगे।
तब आरंभिक विकेट गिरने के बाद रिजवान नए खिलाड़ी, और इस बार रिजवान की शुरुआत रफ्तार से। केकेआर झूम उठ रहे हैं, केकेआर के डगआउट। आरंभिक ओवर वो भी शाकिर की गेंदबाजी, अंडरआर्म क्रिकेट के रोबोट कहलाने वाले ये खिलाड़ी की गेंदबाजी, और अजीम की वो छक्का, और रिजवान के ये आरंभिक चेतावनी। अब तो केकेआर के आत्मविश्वास निश्चित रूप से लोहा की तरह बन चुके हैं। अब इसे पिघलाने के लिए गर्म करने होंगे इस लोहा को, गर्मी दिलाने होंगे इस लोहे को। शाकिर राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स करने की कोशिश रिजवान द्वारा, दौड़कर रनआउट की मौका देखने की मिसफील्ड के ऊपर मिसफील्ड। पिछली बार साजिद की उस मिसफील्ड से 4 रन मिले थे तोहफे के रूप पर रेडविंग्स को। अब एक और रन मिले शाकिर के हाथ से गेंद मिस होने के बाद। 16 रन आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। केकेआर के टीम मैनेजमेंट ध्यान दे, (16 for the loss of 1 wicket after the completion of 1 over. आरंभिक ओवर पर 16 रन बनने के बाद तो अब विश्वास जग चुके हैं केकेआर में, खुश लग रहे हैं अब तिलक और नौशील। और अब रेडविंग्स वाकई ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 57 जैसे रन ना हम कष्ट के रूप पर देखते हैं ना हम आसान के रूप पर, लेकिन अगर इस तरह के ओवर मिल जाए, आरंभिक ओवर पर ही 16 रन अगर मिल जाए, तो बाकी बचे ओवरों के विश्वास, और उस विश्वास से ज्यादा अब क्रीज पर कौन खड़े हैं ये मायने रखते हैं कि किस तरह से रन बनेंगे और कौन खड़े हैं क्रीज पर। कहावत पे कहते हैं ना कि कितनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हो, इससे बेहतर ये सोचो कि आप किसके साथ बैठे हो। अच्छे अच्छों के साथ ऑटो रिक्शा में भी मजा आ जाते हैं, ये तो कहावत है, और ये सच्चे कहावत वाइट बॉल की इशारा अंपायर से। तो क्रीज पर साजिद के होना एक ऐसे भरोसा है केकेआर के लिए। आजकल अंडरआर्म क्रिकेट के एक धमाकेदार खिलाड़ी है, विश्वसनीय खिलाड़ी है, हर बार अपने आप को प्रूव किए हैं साजिद मुल्लारपटना। रिवर्स के साथ थर्ड मैन के एरिया पर खेलने की कोशिश, यहां पर गलती, रिजवान के विकेट। तो यज्ञेश गेंदबाजी के लिए आते ही उनके एक फैन, उनके चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले एक विकेट को 500 रुपए के इनाम यहां पर घोषणा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञेश के वो फैन को जिन्होंने प्रोत्साहन के तौर पर धनराशि ऐलान किए हैं उनकी विकेट के लिए। और इस तरह के प्रतिभाओं को तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि यज्ञेश अपने क्रिकेट की शुरुआत में ही एक जादू गेंदबाजी के साथ अपने पहचान दिखाए हैं। लोगों को छोटे समय पर अधिक मात्रा के अभिमानियों को अपने तरफ खींचे हैं यज्ञेश ने अपने गेंदबाजी के साथ। और पिछले दिन के मैचों में भी आप देखे होंगे रेडविंग्स की जीत पर यज्ञेश की गेंदबाजी के असर किस तरह से पड़े थे। तो यज्ञेश फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद को लेकर, लेफ्ट आर्म राउंड, अच्छी गेंद, जॉकर डिलीवरी, बेहतरीन गेंद, वाकई जबरदस्त गेंद। ये लाइन की तलाश पर है रेडविंग्स। शाकिर की ओवर महंगी साबित होने के बाद यज्ञेश के ओवर के ऊपर जो फोकस है यहां पर रेडविंग्स के। बाहर गेंद को लॉन्ग ऑन पर, खतरा यहां पर, खतरा, और साजिद मुल्लारपटना। रेडविंग्स अब जश्न मना रहे हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि
आरंभिक ओवर पर 16 रन बनने के बाद जिस तरह से उनके विश्वास लोहे की तरह बने थे और उस लोहे को पिघलाने के लिए गर्म करने की जरूरत है। इस तरह से होते हैं गर्म करना, गर्मी के एहसास दिलाना, इस तरह से होते हैं विकेट चुराने के साथ। ये होते हैं कमबैक। दोनों टीम, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आप इन दोनों टीमों में से बेहतर कौन है ये सवाल मत कीजिएगा, केवल फलितांश से बता सकते हैं, रिजल्ट बता सकते हैं इन दोनों में से बेहतर कौन है। नजरअंदाज के लायक खिलाड़ियां बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं दोनों टीमों पर। हर एक खिलाड़ियां अपने आप पर बेस्ट। और आज आखिरी दिन के हर एक मैच भी हर एक टीमों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। अंक पट्टी पर अंकों की संख्या के आधार पर हर विभाग पर 2 टीम क्वालिफायर हो जाएंगे। तो उन दोनों टीमों के लिए जिस तरह के हिसाब किताब हो जाएंगे अंक पट्टी पर, यह हर मैच के बाद ही पता चलेंगे दर्शकों को। यज्ञेश विकेट की सफलता के बाद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से यज्ञेश फिर एक बार तैयार। 17-3 विकेट। रिवर्स करने के प्रयास सफल भी बने यहां पर। अजित, किशोर और अजित की जोड़ी। आरंभिक क्रमांक के 3 खिलाड़ियां साजिद, अजीम और रिजवान शुरुआत पर फटाका फोड़ने के बाद धीरे धीरे से उस फटाका गीले हुए, आवाज कम हुए और वापस निकल पड़े हैं डगआउट पर। तो अब बचे हुए जिम्मेदारी 57 रन की लक्ष्य है सामने। हर ओवर पर योजना के अनुसार रन बनाना होगा केकेआर को। और दूसरी तरफ जिस तरह से आप यज्ञेश की गेंदबाजी पर दबाव डाले हैं, इस दबाव को आगे बढ़ाना होगा। ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद, किशोर छेड़ दिए गेंद को। ऑफसेट के एरिया पर एक सिंगल रन प्राप्त हुए और इस सिंगल रन के बाद रन बढ़कर 19 रन 19। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, केवल मात्र 3 रन 5 गेंदों पर खर्च करने के बाद 2 विकेट यज्ञेश अपने खाता पर जमावट किए हैं। ये होते हैं शुरुआत और अपने आप को प्रूव करने के एक मौके को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये यज्ञेश की गेंदबाजी पर देखिए। सुकेश ने साबित किए हैं, माजिद ने साबित किए हैं, मुबीर जैसे खिलाड़ियों ने। ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन कमबैक वाली ओवर की समाप्ति। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब 37 रन पीछे खड़े हैं, बाकी बचे 36 गेंदों पर। 36 गेंदों पर 37 रन, 36 डिलीवरीज, 37 रन टू विन दिस मैच। हर गेंद के साथ रन जुड़ाने की जरूरत है केकेआर को। तो ऐसे में यहां पर केकेआर अगर सही दिमाग चलाए, विकेट गिराने की उस संभावना को अगर रोकते हैं, यहां पर पार्टनरशिप अगर बिल्डअप करते हैं, लगभग आने वाले 15 गेंदों तक, 12 से 15 गेंदों तक अगर ये पार्टनरशिप बिल्डअप होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस 15 गेंदों पर गेंद के साथ जुड़ते हुए एक एक रन भी मिल जाए, तो जीत की हर एक कदम भी सफलता के रूप पर प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ यहां पर रेडविंग्स विकेट शिकार करने वाले एक अच्छे खासे ओवर, कम से कम 2 ओवर दबाव वाले ओवर दिखाना होगा, प्रेशर वाले ओवर दिखाना होगा। प्रज्वलित तैयार, विजन इंडिया छोर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और इस बार हवा में गेंद और इसी के साथ और एक विकेट। प्रज्वलित पहली गेंद पर ही झटका दिए हैं यहां पर केकेआर को। और इस केपीएल में आप देखे होंगे कई सारे प्रतिभाएं अब तक जिन्हें आप अच्छे खासे गेंदबाज मानते थे, विकेट टेकर मानते थे, लेकिन अब देख लीजिए इस क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट के दुनिया में और भी कितने चेहरे हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहिए। यज्ञेश ने अपने आप को प्रूव किए। अब अजित की बारी, प्रज्वलित की बारी। अब पहली गेंद पर ही विकेट की सफलता, अजित के विकेट।
उस पार्टनरशिप नाम को बिल्कुल नहीं टिकने दे रहे हैं रेडविंग्स, क्योंकि वो जानते हैं शुरुआत की ओवर पर 16 रन खर्च होने के बाद अब अगर किसी बल्लेबाज यहां पर टिके क्रीज पर केकेआर के तो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि गेंद के हिसाब से रन की जरूरत है जीतने को केकेआर को। चौथा विकेट गिरने के बाद अब 5वें विकेट साझेदारी के लिए किशोर के साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे अनुभवी दक्षिण कन्नड़ जिला के चुने गिने महारथियों में माने जाते हैं इमरान KFC कृष्णापुरा। कृष्णापुरा के सम्मान है ये इमरान। KFC कृष्णापुरा को इतने सारे ट्रॉफियों के साथ अगर आप देखे हैं, दूर दूर तक KFC कृष्णापुरा के नाम अगर कोई जानते हैं तो उस नाम की वजह में से एक है ये इमरान। लगातार 2 बेहतरीन गेंद प्रज्वलित, आरंभिक गेंद पर विकेट की सफलता के बाद लगातार लाइन को आप देख लीजिए किस तरह से दिखा रहे हैं पिच के ऊपर बिना ऊंचाई के साथ। अंडरआर्म गेंदबाजी पर वाकई इस तरह की गेंद बहुत ही रंग लाते हैं। बड़े बड़े बल्लेबाज भी चौंक जाते हैं ऐसे गेंदों पर जवाब देने के लिए। प्रज्वलित ओवर की चौथे गेंद, स्लो डिलीवरी और जवाब इमरान से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। ये रहा बुलेट चौका। मैंने आपसे कहा कि नजरअंदाज मत कीजिए इमरान को। ये अंडरआर्म क्रिकेट के ऐसे अनुभवी खिलाड़ी, ऐसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। कप्तान की जिम्मेदारी, तमाम टीम की योजना बनाने की इतने अनुभव है इमरान के पास। हर पोजीशन के हिसाब से बल्लेबाजी गेंदबाजी करने की वो चातुर्यता है। तो इस वजह से ही इन्फ्लुएंस सुरवा जैसे टीम पर अपने योगदान निभाए हैं इमरान ने। और इस चौके के बाद अब केकेआर के विश्वास, हर गेंद पर बदलावन देख लीजिए, कभी रेडविंग्स के डगआउट पर जूम उठते हुए और कभी केकेआर के। प्रज्वलित और इस बार लंबी गेंद वाइड बॉल। प्रज्वलित फिर एक बार तैयार। आरंभिक 3 गेंद बेहतरीन थे। रिवर्स स्वीप और फील्डर के हाथ पर खतरा बन सकते थे अगर विकेट कीपर गेंद को उठाया होता। किशोर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे मौके में विकेट अगर गिरे रनआउट के रूप पर तो खतरा बन जाएंगे, क्योंकि हमारी विकेटों की संख्या 4 गिर चुके हैं। अब हमें संभाल कर खेलना होगा, भले ही एक गेंद डॉट बन जाए। यहां पर विकेट को बचाने की वो कला यहां पर दिखाना ही होगा, वरना हम फिसल जाएंगे। इस विचार को लेकर किशोर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर दिखाया कि क्या गलती कर रहे हैं आप। और इस बार छेड़ते हुए गेंद को किशोर NYM सुने होंगे आप, नित्यानंद युवक मंडला टीम के, तो कोर्ट परिसर के बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त खिलाड़ी हैं किशोर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब बचे हुए 30 गेंदों पर 30 रन, 30 बॉल 30 रन टू विन दिस मैच। हर गेंद पर रन बनाने की आवश्यकता यहां पर। तो दोनों तरफ आसान तो यहां पर केकेआर को है योजना बनाने के लिए, और प्रेशर डालते हुए इस मैच को अपने तरफ भी ले आ सकते हैं रेडविंग्स। 30 गेंदों पर 30 रन, कम से कम 2 अच्छी ओवर की पेशकश यहां पर अवश्य दिखाना होगा यहां पर रेडविंग्स को। छोटी रन खर्च करने के साथ विकेट की सफलता दिखाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप टिक जाए तो मौका आपसे निकल जाएंगे। केकेआर पार्टनरशिप अगर आप दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान। आइए देखते हैं आप क्या करते हैं। क्या रेडविंग्स तोड़ते हैं इस पार्टनरशिप को या केकेआर बचाते हैं इस पार्टनरशिप को। किशोर स्ट्राइक पर, समझदार क्रिकेटर, अनुभवी खिलाड़ी, दोनों अनुभवियां, एक कृष्णापुर के शान और दूसरे तो कोट परिसर के। और आप हमसे बाहर निकलने वाली गेंद को छेड़ने की कोशिश यहां पर 22 के इशारा पैर से विकेट कीपर के हाथ पर लगने के बाद एक सिंगल रन 22 के रूप पर
तो किशोर रिव्यू लेना चाहते हैं इस एक गेंद के निर्धार के ऊपर, क्योंकि किशोर को काफी लंबी लगे गेंद। तो ऐसे में इस श्रृंखला में दिए हुए उस मौके के अनुसार हर एक मैच के समय पर वाइड के लिए एक रिव्यू दिए जाते हैं कि वो अगर निर्धार से खुश नहीं है तो वो जान सकते हैं। अगर ये रिव्यू पास होते हैं तो और एक मौका मिलेंगे, अगर आप गलत साबित हुए तो ये मौका गंवाएंगे आप। दोनों तरफ अब एक प्रेशर की माहौल, क्योंकि केकेआर केवल रनों की जरूरत पर अगर बात होती तो इतने दबाव पर बिल्कुल नहीं होते। इट्स लीगल बॉल, नो वाइड। तीसरी अंपायर जांचने के बाद उन्होंने कहा कि किशोर जी आपके अंदाजा गलत थे, अंपायर अपने निर्धार के साथ सही थे। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद दक्षता। तो आरंभिक बल्लेबाजी पर प्रज्वल के वो शानदार 20 रन के पराक्रम वाली बल्लेबाजी, और उसके बाद शाकिर के 8 रन, और खास करते हुए मैं कहूंगा श्रवण चम्मी के ऊपर। चम्मी नाम से मशहूर है श्रवण, कासरगोड जिला के कोने कोने पर चम्मी नाम से जाने जाते हैं श्रवण को। बहुत ही एक जबरदस्त खिलाड़ी। और इस बार भी वाइड बॉल, रन की वहां पर चांस बन सकते थे, लेकिन पता नहीं आज तो किशोर की बॉडी लैंग्वेज काफी आक्रोशित लग रहे हैं, हर बात पर भड़क रहे हैं किशोर। डगआउट से भी आवाज आए कि किशोर जी ज्यादा लेजी मत हो जाइएगा, जहां पर रन मिलते हैं वहां पर लीजिएगा। और इस बीच क्लीन बॉल, इस बीच इमरान क्लीन बॉल। जब मैदान के ऊपर, पिच के ऊपर, जब दोनों खिलाड़ियों के पास आपस पर तालमेल की कमी नजर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी जब नजर आते हैं, तो नतीजा यही देखने को मिलते हैं बल्लेबाजी में। दोनों खिलाड़ियां अगर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, चाहे वो रन दौड़ने की बात पर हो या हर एक ओवर पर बनाने वाली योजना की बात हो, आपस पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के बीच। वरना देख लीजिए, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, एक दो बार अपने आप को रिस्क में गिराना और उस पर बच के आने के बाद मायूस हो जाते हैं खिलाड़ियां। तो यहां पर भी वही नजारा देखने को मिले। अगले मैच के लिए प्रेस्कॉन वाइकिंग्स और टीम रूफटेक। टीम रूफटेक के सिग्नेचर अभी तक यहां पर दाखिल नहीं हुए हैं, तो जितने भी जल्दी हो सके टीम रूफटेक अपने सदस्यों के हस्ताक्षर यहां पर दाखिल करें। ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಖಲಿಸಿ। तो विकेट के ऊपर विकेट ही यहां पर भारी पड़ रहे हैं केकेआर को। रनों की जो जरूरत है उस पर कोई चिंता नहीं, हर गेंद के हिसाब से रन की जरूरत है, लेकिन विकेट को बचाना ही यहां पर परेशानी वाली बात बने हैं केकेआर को। और इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, बल्लेबाज को आप जानते हैं राजेश ओबर, अंडरआर्म क्रिकेट की शान है ये राजेश ओबर, टेनिस क्रिकेट के हीरो लगते हैं ये राजेश ओबर। अंडरआर्म हो, ओवरआर्म हो, टेनिस बॉल हो, टेप बॉल हो, हर तरह के क्रिकेट पर एक चमक दिखाते हैं अपने क्रिकेट के उस पेशकश के साथ राजेश ओबर। तो अब देखना है कि ये जिम्मेदारी किस तरह से दोनों बाएं हाथों खिलाड़ियों के साथों साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं केकेआर के, क्योंकि एक तरफ किशोर खड़े हैं और दूसरी तरफ राजेश ओबर। और अब तो जम जाएंगे, क्योंकि किशोर और राजेश ओबर के दोनों की जो आदत होते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनके, मैं कहूंगा सूट हो जाएंगे ये एक दूसरे पे भारी। छेड़ दिए गेंद को, छेड़ दिए एक सिंगल रन के इरादे के साथ। और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या बने हैं कुल मिलाकर 31 रन, 31। चौथे ओवर की प्रगति, आखिरी गेंद बाकी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। 25 गेंदों पर अब 26 रन की जरूरत है जीतने के लिए केकेआर को, दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा। और इस बार भी रिवर्स के लिए, लेकिन शाकिर जानते हैं राजेश ओबर की हर एक मूवमेंट्स को,
वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपस पर इनके क्रिकेट के अनुभव तो काफ़ी लंबे समय से है। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 24 गेंदों पर 26 रन के दरकार है। यहां पर तो एक दोनों तरफ एक दुविधा वाली आलोचना, क्योंकि 4 ओवर पर 26 रन आसान भी और मुश्किल भी। ದಯವಿಟ್ಟು KKR ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ತಾವು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ವಿಕೆಟ್ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಹನುಮಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಅದೆಷ್ಟೋ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ಮುಂದಿನ ಆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ. Thank you very much, Janab Star Nawaz ji. And 31 for the loss of 5 wicket. The match which looks to be evenly balanced. And Shakir is a bowler introduced by the captain of the side from Vision India and Kishore straight away picked up a single for that. Here is an announcement for Shakir. And if Shakir if he takes wicket, each and every wicket, Shakir will go and get 500 rupees from Kishore Sai Slok of team Redwings Rangers. So it's going to be an opportunity for Shakir to grab the money along with the wicket, and again nicely and delicately played there by Rajesh. Just time he implemented that unorthodox technique, that is reverse sweep, one of the most popular cricketing stroke in present cricket, and he is so good in that, so no problem whatsoever to getting that single down to deep third man division. 33 for the loss of 5 wicket. Again Kishore nicely plays it down to deep square leg region. These two batters are really playing a waiting game here. This is a waiting game in the sense they're playing as for the condition required. They're not taking any risk at all in the negation. Just rotating the strike for the good deliveries and sending some odd deliveries for the big runs like boundaries. Here is Shakir again. Bows Rajesh. Catch it is a call, but no one there in that short third man region. The third man is in the deep. So again, both the batters are rotating the strike very well and taking their team into victory. 35 for the loss of 5 wicket, and they have to get another 22 more runs to win this match. 26 revocation, and one more good delivery there from Shakir there. This is a dotted what team Redwings Rangers need to get. 18 more runs, 18 more deliveries remaining, and they have to get revocation 19 more runs, 19 more deliveries remaining, and they have to get another 22 more runs to win this match. Drives that one, bowler's back drive. Yadnesh slight a bit of fumble from him, otherwise opportunity which is created for the run out in a non-second, and because Kishore is the one is running towards the danger run, and that's all happening when he was little bit condition is going to be very tense. Good out there from Shakir. 5 came from that over after completion of over number 6, chasing 5 in fact, and chasing a total score of 57 to win this match. Team KKR 36 for the loss of 5 wicket. That means in the remaining 3 overs they need to get another 21 runs to win this match at the required run rate of exactly 7 runs per over. 7 runs per over in the sense in the 3 overs the difference between run and ball exactly that 3, and that 3 difference certainly it's going to be manageable. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ KKRನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನವರಿಗೆ ನೀರು ತರುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಇಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ 36 for the loss of 5 wicket, 5 overs completed, 3 overs remaining. A lot of conversation is going on between
between captain and yes, a senior player like Shakir to see that which bowler is going to be very suitable to bowl that very important over. And why not Dakshit, one who got a fantastic tournament from the ball. He got some wickets in this tournament, Dakshit, with this excellent line and run. So why not captain certainly wanted him to come and bowl in this very, very crucial stage of the match. Kishore so far is looking so good along with this partner Rajesh. Kishore so far is rotating the strike very well. Rajesh is, everybody knows, he not only rotates the strike, but when condition asked him to go for the big shot, he got the ability, the potential of hitting some big shot. This time, lovely delivery. What we are talking about? Oh, Ashwin Raj behind the stump, who knows that Rajesh is our kind of the player, always searching for the run. Almost he left the crease in the non-striker's hand. So immediately Ashwin Raj wanted to get the wicket of Rajesh. So he just tried for the run out, but ball just misses the stump. But a dotted delivery, very important delivery, which is become a dotted. 17 and 21 required. Again, a miss. Looks like that ball is outside the line of off stump, and umpire has got no hesitation at all to call that wide. And umpire straight away they're asking for the third umpire. Why not when you are when your team having a provision of getting one DRS for the wide and decision review system which is given for the wide ball. So why not Shakir want to take a little bit opportunity whether the ball which is wide or not. They thinking that fielding team thought that it might be a ball which is called to be a fair delivery, but here is umpire called it is a wide ball. Karna saying that as doing his umpiring job of Harish Padil, saying that we are taking that decision back, but the decision which is confirmed by the third umpire, absolutely this is a wide one. 37, much required run. Dakshit with a short run up. Round the wicket bounce, right arm. Oh, that ball absolutely nip back into the left-hand batter. He's got a bat onto that last moment. Otherwise, it is going to be a big the ball which is going to hit the midland leg stump of Kishore. One more single, 38 for the loss of 5 wicket. So 19 more runs required for the victory, and remaining 10 16 deliveries. This time again, lovely delivery indeed. And one more dotted delivery. Each and every dot ball will go and create the problem here for KKR. Dakshit is doing a right job, giving some flight. You need to appreciate his effort of flighting the ball. He's not really worried about, he's not really bothered about. Of course, he's flighting the ball. Maybe it was a risky one, but he knows that if he do that, he can get some wicket, he can get some dotted deliveries. Again, it looks like one more dotted delivery. Back to back 2 dotted deliveries. Now pressure is on now for Rajesh. Now big shots coming from the dressing room of KKR. And even in the dressing room of Redwings Rangers. Every dot delivery which is enjoyed by the Redwings Rangers supporters, but not the KKR Mangalore. 38 for the loss of 5 wickets. Still they have to get another 19 more runs to win this match. 14 deliveries remaining. Now difference almost become a 5 between run and ball. So far Dakshit is my young man doing a right job for his team. One more dotted delivery. Oh, can you believe this? Absolutely magnificent piece of bowling performance from Dakshit. One ball remaining. So far in this over, 1 single and 1 wide. And that means only 2 runs which is conceded so far in this over out of 5 deliveries. That means 13 delivery remaining. 19 runs required for the victory. Dakshit again. Back to his bowling mark with the short run up. Pass umpire Harish Padil. This time appeal, but I think it's in fact outside the line of off stump. One more single. Rajesh will go into retain the strike. Excellent over. Great over from young man Dakshit. Have a look at his teammates. Why not
need to appreciate his work. It's not a so easy job to come and bowl in this condition like that. Not having experience. Tournament like the high voltage matches like this, and prestigious tournament like Kudla Premier League. It's not so easy for you to control your emotion and control your tense moment. And he did a great job. And holding now to ball that holding is now in that very crucial over, and bowled an excellent over of just 2 runs. One it is a leg by, one which is a extra, that is a wide, and only one which is from the bat. So 3 which is came from that over. 39 for the loss of 5 wicket. Last 2 overs remaining. 18 runs required for the victory. Eighteen required for the victory. Yajnesh, one more good bowler. This time Rajesh picked up a single here. With that single, score numbers on to 40 for the loss of 5 wicket. 17 required. 11 balls remaining. This match is turning out to be very, very interesting indeed. KKR desperately wanted to win the match. Redwings Rangers, certainly they wanted to win the match because they will going to get the place in the top in the points table. This time Kishore lofted that one. Kishore and Karna. Oh my goodness. Once it looks like there's only the single or more than that is a couple of runs. But Karna is not believing his eyes that why the ball is getting that much of bounce. Unbelievable. I want to see it in a replay. What really happened. Kishore is played that one. Just a chip shot. Have a look at that one. Not a power in that shot, but good enough for him. Have a look at the bounce of the delivery. It's unbelievable. The tall player like Karna even is fails to collect that one after one bounce. Ball is just going over that of him. He's trying hands. Welcome boundary coming up here for KKR. It's 44 for the loss of 5 wicket. 11 balls now. 10 balls now and 13 runs required for the victory. Now equation seems to be because of that boundaries slight a bit of easier for KKR. This time lovely shot, sweep shot comes into play. Will they come back for the second? Yes, he is coming back for the second. Kishore slight a bit of late to react to that second run. But a couple of runs. What innings Kishore is playing here. Absolutely under pressure. He playing some quality cricketing strokes. Once again, placement has been outstanding here. Swept the ball right in the gap. And it's a dimension of this cricket ground is concerned. And for the left-hander, deep square leg is always going to be a long distance. And even for long distance for the fielder in the deep square leg in front of square to cover. So that ample time for the batter to complete this couple of runs. 46, 11 required. 9 balls remaining. Yajnesh bowls to Kishore. Kishore is going for the drive. One more single been added to total. Kishore is playing a good innings for his team. 47 for the loss of 5 wicket. Now Rajesh back into strike. 10 required. 8 balls remaining. Difference is just a 10. 1 for tie. If the match will going to be ended in a tie, then points will be shared. Yajnesh, left arm over the wicket, drives that one. Rajesh quickly realizing that in this over I don't want to make a mistake what I did in the previous. No ball called by umpire. Behind the square, 3 fielders. Behind the square, 3 fielders. It is not available. It's not be considered.
So it's a little bit confusion is going on, argument is going on here about that, where the fielder is standing. Of course, there's a mark is there in the left side of our community box. That now mark which is made there, because as per the rules and regulation of cricket is concerned, umpire just taking that decision back, Arish Padil. Slight a bit of confusion for umpire. Now umpire Arish Padil. Umpire taking the decision back. It's not a no ball. It's not a no ball. Maybe slight a bit of confusion because one mark which is made for from that end, where it means bowler's end mark, what Arish Padil sir is observed. That's why he called it snow ball. It's not for the batter who is batting in this end. And no ball which is taken back. That means only 1 run. 48 for the loss of 5 wicket. 9 required. 7 remaining. 7 balls. 9 runs required. Wideish long on. Deep square leg. Deep fine leg. Wideish long up. Deep cow point and deep third man. All my. This is not a really not acceptable in this condition from the bowler, isn't it? Now it's going to be a question so easy. 8 required, 7 balls remain because of that wide ball by Yadnesh, which will going to release the pressure from the batter. 8 required from 7, and Yadnesh wanted to do something special in this last delivery. Left arm over the wicket bounce. This time lofted that one over the head of the infield. They're running hard. They're coming back for the second. Now in the last over, 6 runs which is required from 6 balls. 6 to get from 6. This over is turning out to be a great over for KKR. 12 runs came from that over. Can you believe this? The boundary which is really going to be very handy. One extra run and extra deliveries really becomes handy for KKR. Now look at the KKR dugout here. Everyone now started to feel, they started to dream that your team, certainly the opportunity for them to be in the qualifier. So now timeout, which is umpire Arish Bhatt is saying here. That means I don't want to say that it is going to benefit batting side. It can benefit fielding side because they wanted not more than the ball. They wanted ball to ball run. Keeping one fielder inside the ring means maybe a little bit pressure for the batters because they're not looking for the big shot. They're only looking for singles. And putting one fielder inside the ring means they're getting a gap is always going to be slight a bit of tougher. So next match maybe played between Trescon Vikings versus, of course it's between Trescon Vikings versus team Roof Tech. So that toss which is already completed, toss won by team Roof Tech. So please get ready, 2 teams. Now 6 required from 6. Altaf Basavanagudi, leg spinner, which is cannot be underestimated in cricket. 6 required from 6 ball. Rajesh is on strike. Altaf bowls. Bowled him, cleaned him up. Yet what I am talking about, it is cannot be underestimated, the leg spinner. What a great piece of bowling, but I don't think it's not a great piece of batting there from Rajesh. The experienced batter like Rajesh, will it going to be necessary for him to go for the big shot? No, I don't think so. He is such a good player as far as picking up a single is concerned, sweeping the ball here and there is concerned. But once it is as a leg spinner, always it is going by tempting the batters. Leg spinner means always bowler batsman thinking like that he lose deliveries. I can hit one big shot for this ball. But by doing that,
So, what we are just expecting from this man, Rajesh, for KKR, he is not really completes the job. He back into pavilion. Now, 5 balls, 6 runs required for the victory. The new batsman came into middle Jojo Suraj from our neighboring district, Kasaragod district. He's also got a good tournament from the bat. But responsibility here for him to get the 6 runs, the remaining 5 deliveries. Altaf Basavanagudi trying for one more wicket, trying for one more dotted so that he can put some pressure onto the new batter, because it's always very relaxed time for the bowler whenever the new batter in. Again Altaf bows from the far end, a little bit from the commentary box, and this time ball is in there but out of the reach of the fielder, and just a single there. So with that single, now 5 balls remaining, a little bit correction, 4 balls remaining, 5 runs required for the victory. KKR, of course, if they fail to get the victory here, I think it's, maybe the tie will going to be enough for KKR to qualify. It's 52 for the loss of 6 wickets. 5 required from 4 deliveries. Kishore, so far he batted brilliantly, but job which is not yet over. Altaf bows. This time top edge, and again the ball will go into land it safely. 2 catches opportunities there for the team Rangers, Redwings Rangers. But boy, the 2 occasion that ball is which is fell no man area. The 53. 4 required. 3 balls remaining. Basavanagudi so far he bowled good line and length. Again, 4th time in this over. Pass the umpire Arish Patel to Jojo. Just and square of the wicket, beautifully driven. Will they come back for the second? Yes, they're coming back for the second, and they made it. Excellent running bit to the wicket. Now equation becomes so simple. 2 to get from 2 balls. If they manage to tie that one, KKR, they will going to qualify. 2 required for the victory. And a tie even for a Red Wings Rangers, taking them into top in the points table. No, maybe. Because they got 1 match to play. 1 match remaining for team Rangers. What a match. What a match. First match witnessing. I already mentioned before start of this match. I promised everyone this match is going to be one of the best match, I want to say. That's why we can see that crowd here in this UCC cricket ground, a big number. Now 2 runs required from 2 balls. Altaf Basavanagudi bows. This time top edge, but the ball was going to land it into no man area. They definitely come back for the second. Jojo lost his bat, but they won the match. KKR winning that very crucial match, and Kishore is the one who really batted magnificently for his team and holding his nerve till the end and taking a responsible innings for his team. 1 ball to spare. Team KKR got the victory, and happy faces we can see along with the owner. Naushir is the one happy owner of KKR. Is the co-owner of KKR, and what a magnificent performance here from KKR. The 7th over, which becomes very costly for Red Wings Rangers. 12 which came from that over. And the first over we are talking about the 15 runs which came